Okay, there was some connectivity issue. Okay, back to the lecture. This now we'll discuss the antifungal class. Okay, this is a classification for antifungals. We have the polyenes, inhibitions on the fungal cell membrane. Like example that we have amphotericin. Azoles antifungals हैं, जिसका example हमारे पास ketoconazole, fluconazole और voriconazole and itraconazole that we have. And also we have non-azoles like terbinafine. Anti-metabolite और pyrimidine analogs में flucytosine वगैरह हैं. Echinocandins antifungal, which is the latest and new class of antifungal. They have the actions on the fungal cell wall synthesis inhibitors. And we have examples like caspofungin, micafungin, and endilofungin. Antifungals, also known as usually antimycotic drugs, these used to treat two type of fungal infections like superficial infections and systemic fungal infections. Okay, most practices in the hospital like amphotericin B, this from the antifungal class. It binds to ergosterol, altering cell membrane of the fungus microbe, and it's indicated for the systemic fungal infections. Like there are variety of fungal infections, क्रेप्टो है या कैंडिडीनिया है, उसके अंदर यूज हो सकता है. एस्पेलर जो इसके अंदर यूज हो सकता है. म्यूकोर माइकोसिस के अंदर यूज हो सकता है. क्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इसमें यूज हो सकता है. Infections of the GI tract caused by the Candida albicans उनके अंदर यूज हो सकता है. The strength available with us 50 milligram per vial, and the dilution is diluted in the dextrose 5% water. So those patients are diabetic and they have the fungal infections, and we start the amphotericin. We'll closely monitor for the sugar levels of that patient. These are the dosing information for the peds, like 0.25 milligram per kg per day. और मेंटेनेंस भी वही है, उसी हिसाब से दे रहे होते हैं. अगर अडल्ट में कहें तो 1 मिलीग्राम पर केजी पर डोज पर डे के हिसाब से दे रहे होते हैं. There are some data that the amphotericin जो conventional form है उसके साथ कोई infusion related effects होते हैं. So in some clinical practice, once we start the amphotericin B, as a standard, it should be infused over 4 to 6 hours to avoid some infusion-related effects. So before before administration of amphotericin B, we should give the pre-ampho medications. Like we can give antipyretic drugs or some antihistamine drug to avoid some amphotericin-induced infections. Adverse effects patient में क्या produce हो सकते हैं? More frequently that we have to monitor for the electrolytes, because this drug can cause hypokalemia in the hypomagnesemia and hypokalemia in the patient. And infusion related infections like hypotensive हो जाता है patient, and chills and tachycardia, flash blood, phlebitis वगैरह cause हो सकता है. So that's why we it's a nephrotoxic drug as well. So it's better to give adequate hydration before start of amphotericin and after post-ampho administration. Another class of this antifungal is azole group fluconazole. It's used in some candida infections. Variety of is systemic or some esophageal or orangeophageal candida infections. These are the per kg dosing for the peds, and adult we directly go for 200 to 400 or in some cases 800 milligram per day. What we have to monitor for the azoles जो antifungal class है like fluconazole है, तो हमें कोई patient might experience some headache, might experience some GI effects, patient might experience seizures like activity,
Patient may have QT prolongations if is given with the combination of some other QT prolongation agents. Our patient who is with the cardiovascular disease, so we have to monitor closely if patient on fluconazole with a higher doses. Another class is voriconazole. It's available in parenteral and oral form. Uh, it can be used like 9 milligram per kg per dose and divided doses. Uh, it's it have some have same effects that need to be monitored like QT prolongation and liver functions. Okay, we'll take a short break of 5 minutes and we'll continue further with the rest of the slides. Thank you. Okay, welcome back to our session on antimicrobial. On this second half, we'll discuss for the antimicrobial resistance that happening throughout the globe. Okay, what basically antibiotic resistance is that is the ability of bacteria and other microbes to resist the effect of antimicrobial to which they were once sensitive. यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि रेजिस्टेंस क्या होती है बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कि कोई ऐसा बैक्टीरिया की कोई ऐसी एबिलिटी जो कि प्रीवियसली उस एंटीबायोटिक क्लास से जो है सेंसिटिव था अभी वो उससे रेजिस्टेंस हो गया यानी कि वो थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं कर रहा वी हैव वास्ट एग्जांपल्स एज वी हैव सीन MSSA convert into MRSA वगैरह और E. coli converted into ESBL E. coli many examples like in Pakistan there's a threshold for the typhoid Salmonella typhi that converted into XDR after the use of different antimicrobial class for treatment. Okay, what the basic terms that we need to understand? Sorry. What is MDR? Multi-drug resistance is the non-susceptibility to at least one agent in 3 or more antimicrobial categories. यानी कि in vitro डेटा होता है कि जिसके अंदर आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो वो ससेप्टेबल वन स्पेक्ट्रम अगर ये तीनों एंटीबायोटिक देखें तो ये डिफरेंट क्लासेस से हैं. Then we have another class definition is the XDR. It's non-sensitive to at least one agent in all or 2 or fewer antimicrobial categories. That's from the bacterial isolates remain susceptible to only 1 or 2 categories. Like we have examples Enterococcus, resistance to all antibiotic tested except for the linezolid and tigecycline. Then we have the third term definition is the pen resistance PDR. कार्बोपेनम से भी सेंसिटिव नहीं होता और वो जो है cephalosporin से भी सेंसिटिव नहीं होता वो पेनिसिलिन से भी सेंसिटिव नहीं होता तो these are the few examples of that antimicrobial resistance के. अच्छा मैकेनिज्म क्या हो सकता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का वंस एनी पेशेंट ऑन द एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी. एक मैकेनिज्म ये हो सकता है डिस्ट्रक्शन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बीटा लैक्टेमेज एंजाइम्स यानी कि कुछ बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं तो वो कुछ एंटीबायोटिक को हाइड्रोलाइज कर देते हैं. लाइक वी हैव क्लासिकल एग्जांपल फॉर दैट इज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन की जो बीटा लैक्टेम रिंग है उसको हाइड्रोलाइज करके वो खत्म कर देते हैं पेनिसिलिन के इफेक्ट को. दैट्स व्हाई इफ यू रिमेंबर कि हमने पहले स्लाइड्स में जो है एक कॉम्बिनेशन दी थी पेनिसिलिन एंड बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स की लाइक जिसमें ऑगमेंटिन और क्लेवेनिक एसिड है टेजोबैक्टम और पिपेरसिलिन. पिपेरसिलिन is a part of penicillin. Tazobactam is the one agent which is going to act on the beta lactamase enzymes.
तो अगर कोई मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जिसमें डिस्ट्रक्शन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स, तो उसमें मोस्ट बैक्टीरिया ईएसबीएल होते हैं, लाइक वी हैव ई कोलाई वगैरह, क्लेप्सिला, ये ईएसबीएल प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें हम वो एंटीमाइक्रोबियल जो है ना सिलेक्ट करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट व्हिच इज विद द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर एंजाइम्स, लाइक वी हैव गिवन पिपरसिलीन का एग्जांपल हमने दिया। In some cases we are going to use for the augmentin as well. दूसरा मैकेनिज्म क्या हो सकता है? रिड्यूस पेनिट्रेशन थ्रू अ लाइपोपॉलीसेचराइड मेम्ब्रेन टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि कुछ ऐसी बैक्टीरिया जो है ना पेनिट्रेशन कम कर देता है, वो जो उसके स्ट्रक्चर में है, सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन में, उसके ऊपर एंटीबायोटिक की पेनिट्रेशन कम हो जाती है, तो ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म भी डेवलप हो सकता है। देयर इज अनदर एग्जांपल, इनहांस इफ्लक्स फ्रॉम द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो बैक्टीरिया का होता है इनसाइड द सेल, उसमें से इफ्लक्स यानी कि जो एंटीबायोटिक इंटर Okay, there's another slide which showing some different class of beta lactamase, like एम्बलर क्लासिफिकेशन है ए बी सी डी, और ये साइट्स दी हुई हैं किस साइट पे जो है ना वो रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। लाइक क्लास ए है पेनिसिलिनेज, ये एंजाइम्स हैं जो कि पेनिसिलिन्स को रेजिस्टेंस करते हैं, तो एंटीमाइक्रोबियल अफेक्टेड जो है वो पेनिसिलिन्स और सेफलोस्पोरिन्स वगैरह हो सकते हैं। कार्बापेनिमेज जो कि affected by most of the beta lactams and also they can affect some carbapenems as well। और एक क्लास सी है लाइक जिंक साइड जो होती है मेटालो बीटा लैक्टमेज, उसमें जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स है वो एनडीएम है, न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टमेज है, that can be covered by the that can be produced by the pseudomonas and acinetobacter वगैरह। और ये एनडीएम जो है इट्स इशू फॉर द साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि इंडिया या पाकिस्तान, इसके लिए जो है ना ये इशू है, बिकॉज वी आर फेसिंग सम केसेस ऑफ सीआरई मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, दैट कार्बापेनम्स जो है वो कल्चर रिपोर्ट के अंदर रेजिस्टेंस आ रहे हैं इन पर्टिकुलर माइक्रोबियल्स। Then we have the class C is resistance to cephalosporin and some penicillins as well.
Then we have the class D is some resistance to some beta lactamase itself also. यानी कि इसमें बीटा लैक्टमेज की जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ भी रेजिस्टेंस होते हैं, लाइक पिप्टेज वगैरह, पेप्सिलिन टेजोबैक्टम हो गए, और उसके साथ जो है ना वो रेजिस्टेंस होते हैं. So for that, it's a globally such kind of resistance mechanisms can be detected from the molecular methods from the microbiology to detect what kind of gene genetic examples there, what kind of genetic mode of resistance that bacteria is going to produce in the patient. Okay, there are a few examples on antimicrobial resistance bacteria as a history snap. If you'll see penicillin, we discussed in 1941. The patient was, but this penicillin was introduced in the healthcare system to be treated the some Staph aureus infections. So they detect the MRSA in 1967 and respectively, the other kind of resistance against the Streptococcus pneumonia and Neisseria gonorrhea. Got some resistance in 1998 and 2002 respectively for the VRE and vancomycin resistance Staph aureus and vancomycin resistance to Enterococcus. Like we have the antifungal resistance also with the amphotericin. Like we have cephalosporin resistance in 1987 and so on. We have ciprofloxacin resistance in 2007. If you see it's well known that ciprofloxacin is the quinolone group of class of antibiotic now become resistant for the UTI infections. It's no more recommended in some part of the globe that as a first line for the urinary tract infections. So once if there's a sensitive report, sensitive to Cipro, then physician is going to prescribe. Otherwise, it's not good to prescribe as an empiric therapy for the UTI. There are some letters from WHO and CDC that what threat, what kind of resistance challenges that healthcare system is facing, like CRE hai, like Acinetobacter is a serious challenge, ESBL and VRE, Pseudomonas is a serious challenge, and they have given the title for the Pseudomonas in the CDC guidelines is a bacteria difficult to treat. Okay, what could be the factors that enhance the risk for antimicrobial resistance? There are many factors. Can be these factors can be direct factors involved in the antimicrobial resistance or indirect factors, the secondary factors. Like secondary factors, we have the patient factors, obesity and body weight, disease factors, the renal impairment, hepatic impairment, penetration or absorption of that particular drug that we prescribe, protein binding of that drug, environmental factors, healthcare team, infection control, inappropriate practices could be a development of resistance of antimicrobials. दूसरे रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? एंटीबायोटिक मिसयूज और ओवर यूज, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, यानी कि इनअप्रोप्रिएट यूज के अंदर जो है ना डोजिंग का इशू आ जाता है, सिलेक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल आ जाती है, और डीएस्केलेट करना था यानी कि नैरो डाउन करना था, हमने नहीं किया, और क्या उस पेशेंट को इन्फेक्शियस था, पेशेंट वाज इन्फेक्शियस और नो, दैट वी स्टार्ट एंटीबायोटिक ऑन दैट पेशेंट. Extended hospitalization or extended
Okay, we are talking about the antimicrobial resistance. तो जिस तरीके से हमने कुछ मैकेनिज्म डिस्कस किए कि क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं या पॉसिबल रिसोर्सेज फॉर द रेजिस्टेंस इन हेल्थ केयर सिस्टम इन हॉस्पिटल, तो हम उसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं या हाउ वी कैन गो फॉर दी टू कम्बैट द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बिकॉज nowadays in a health part of healthcare system we are facing some MDROs and XDR infections and some bugs which are very difficult to treat that need some prolonged hospitalization और उनकी जो healthcare cost है वो extended हो जाती है and plus also there can be a chances for the transfer from one patient to another patient. So it's also a global problem. ओके, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं एएमआर को, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को? इट्स द बेस्ट टूल सपोज टू बी दैट nowadays increase in practices the antimicrobial stewardship program can only the solution to reduce such kind of antimicrobial resistance because antimicrobial stewardship program is the interprofessional effort across the continuum of care involve timely and optimal selection, dose, duration of any antimicrobial for the best clinical outcome for that patient to be treated and decrease the toxicity from that respective antimicrobial. तो स्टीवर्डशिप के अंदर जो है बहुत सारी इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स नॉट ओनली द फार्मेसी ओरिएंटेड, नॉट ओनली द infection control oriented, not only the clinician or other healthcare professional like microbiology oriented. It's a team effort from the multidisciplinary healthcare team, like जिसमें नर्सिंग आ जाती है, जिसमें जो है ना इन्फेक्शन कंट्रोल के टीम आ जाती है, जिसमें जो है microbiology involved, जिसमें primary physician involved, जिसमें primary pharmacy involved, like clinical pharmacy involved in that to overcome a resistance because ASP program is designed to give you the best possible solution for that infectious patient. यानी कि सिलेक्शन में भी है, उसके डोजिंग, उसके पीकेपीडी पैरामीटर्स एज वी डिस्कस इन अर्लियर स्लाइड्स के जो भी पैरामीटर्स हैं एंटीबायोटिक रिलेटेड और उसकी जो बेस्ट डोजिंग एंड possible usages according to recent meta-analysis studies and recent guidelines. तो वो स्टीवर्डशिप प्रोग्राम ही है जो एक टूल ये है जो ओवरकम कर सकता है, जिसमें इस टीम एफर्ट ऑफ मल्टी टीम्स इन्फेक्शन कंट्रोल अपना रोल प्ले करेंगी कि देयर शुड बी a source control of that infection. If it is MDR, microbiology can play role in AMR by ASP program is that they are going to generate the MICs, they are going to generate the best possible sensitivities of that bug. Clinical pharmacy will review the dosing of that patient, what possible doses for respective patient, क्योंकि उसके kinetic different होते हैं as compared to population data से. और जो clinicians हैं, he or she might observe the patient clinical condition कि उसमें improvement किस तरीके से आ रही है वो देखेंगे. तो it's a team effort to combat the antimicrobial resistance in healthcare system. And also the other indirect approaches might be there are seminars
educate healthcare professional, policy making in use of antibiotics. कि जिस तरीके से मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, if there's any ID department, infectious department in the hospital, so they are going to classify antibiotic in some categories के कुछ antibiotic को उन्होंने reserve किया होता है for the last line agent to be prescribed. So without their consultation or pre-authorization, it's not used. तो इस तरीके से हम जो है वो रेजिस्टेंस को कम्पेट कर सकते हैं. And also we can go for some activities like antimicrobial stewardship grand rounds in the hospitals to cut off the unnecessary antibiotic for respective patients admitted in the hospital. Okay, might be the last one that we are thinking for the antivirals class. This is a classification for the antivirals according to therapeutic uses. It's the anti-herpes agents like acyclovir and ganciclovir वगैरह इसमें आ जाते हैं. Antiretroviral agents, especially for specialized for the HIV patients, जिसमें न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आ जाते हैं, जिसमें नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आ जाते हैं, प्रोटीज इनहिबिटर्स एंड एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स लाइक oseltamivir, and some there are miscellaneous other antivirals to be used for the viral infections like Hep B and Hep C. Acyclovir usually is available in topical and oral form. It's and IV form, intravenous form, as a dosage form of an acyclovir antiviral, and is indicated for the some kind of herpes and its type and some chickenpox infections in immunocompromised or topically some viral infections. These are the dosing informations. In peds, supposed to be we can go for 10 to 20 milligram per kg in maximum, and in adult we are giving as a general recommendation of 5 to 10 milligram per kg every 6 hours or every 8 hours, depending on the indication, depending on the disease of that patient. For acyclovir, if any patient receiving acyclovir, what should be the special consideration like amphotericin B? It can hit the for the nephrotoxicity is a standard, should be infused over 1 hour at a constant rate to prevent the renal damage. And also there are some guidelines suggest that we should go for the pre and post hydration once we administer acyclovir. While oral form of acyclovir might patient might produce some GI effect in that. As we discussed, there should be hydration before and after administration of acyclovir for the viral infections. Then we have another example from the antivirals like anti-influenza drugs, oseltamivir. It's a prodrug. It's need to be hydrolyzed in an active form to the oseltamivir carboxylate. It inhibits influenza virus neuraminidase. It's also known as to cleavate some budding viral progeny. So there are some dosing information. It's used for the seasonal influenza, like वो influenza type A or B के ऊपर दोनों के ऊपर जो है ना effect होता है. If it is detected, we are going for the short term duration of 5 days, may exceed to 10 days if recommendation are there. And drug induced effects might be GI effects वगैरह हो सकते हैं. Yeah, patient might experience on higher doses like headache, सर में दर्द होना या कुछ ऐसी चीजें अलामत हो सकती है. Then there's another class from antivirals. Supposed to be we recently gone through this. Is a remdesivir. It's an antiviral drug to be used for some COVID patients. Some have some conflicting studies. Some studies may benefit in mild to moderate COVID infections, but some studies shows there's no benefit in severe COVID infections. And these are the dosing informations for the remdesivir. 200 milligram as a loading dose, then 500 milligram once daily for 5 days is as a standard to be given for the COVID positive patients. And some patients, according to guidelines, may require for the 10 days of therapy, for especially those went on the ventilation. These are the monitoring parameters baseline. We have to go
For the hepatic function, then we periodic look for the CVCs. Then it should be administered over 30 to 130 minutes. Flush the line before and after with the normal line before and after administration of remdesivir. Then there are some pediatric doses with the same, and adverse effects as we discuss might be there's a chances patient who's on a remdesivir might rise in the bilirubin levels. If it is 5 times or 10 times higher, it's recommended to stop the drug. And also in some studies, infusion related reactions might happen. So we have to monitor that one once we start first time for the remdesivir. And also we go monitoring for the renal function periodically, once in a week at least with the baseline. Okay, what are the special consideration for antimicrobial use? It's essential to obtain the cultures from appropriate site before the beginning of antibiotic therapy for respective patient. Like patient is coming in sepsis, is sepsis survival guidelines recommendations are there that you have to go for the cultures before the start of the antibiotic within 1 hour. Before beginning the therapy, state the drug allergies, which is very much important. Like patient is allergic to any medication or any antimicrobial, the hepatic, liver function, cardiac functions, and some other lab studies that we have to ensure that. Be ensured to obtain thorough patient health history, including immune status. While patient is immunocompromised or not, then we have to go for, we can manage the appropriate selection of antimicrobial. Assess the conditions that may contraindicated to antimicrobial use. जिस तरीके से हमने पहले कहा था कि प्रिकॉशनरी यूज है, अगर पेशेंट पहले ही नेफ्रोटॉक्सिक है और अगर नेफ्रोटॉक्सिक एकिया है या सीकेडी है और डायलिसिस के ऊपर है, तो हम उसको अगर कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग देंगे तो माइट बी देयर चांसेस टू वर्सन ऑफ दैट कंडीशन एज वेल. या कुछ ऐसी एंटीमाइक्रोबियल्स होती हैं लाइक पेनिसिलिन से अगर कोई एलर्जिक है, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल सोर्स दैट वी सपोज टू बी गिव टू दैट पेशेंट. Assess the sign of super infections. ये बेसिकली तब होता है once the patient is on a prolonged treatment in the hospital. कि कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के ऊपर है तो वो कोई सुपर इन्फेक्शन तो डेवलप नहीं कर रहा, या कोई इम्यूनोसप्रेशंस के ऊपर है तो व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन दे आर गोइंग टू डेवलप दैट. थैंक यू. Now the session start for the question and answer. If you have any question, you are welcome to ask. I think Lucas. Yeah.